Hi friends, welcome on Europedia and you are watching Europedia videos for Material Management course of Coal India Limited. Coal India Limited ने Material Management पोजीशन के लिए नया सिलेबस लॉन्च किया है इन 2025 एंड Europedia इज कवरिंग ऑल द टॉपिक एज पर द सिलेबस। मेरा आज का जो वीडियो है वो परचेज मैनेजमेंट जो टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 2, उसमें से जो सब टॉपिक है प्रोक्योरमेंट साइकिल उसके ऊपर है। और प्रोक्योरमेंट साइकिल के अंदर हम कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे जैसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एंड जो परचेज ऑर्डर है ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। तो परचेज ऑर्डर टर्मिनोलॉजी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है और परचेज साइकिल में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं परचेज साइकिल में, प्रोक्योरमेंट साइकिल में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये परचेज मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने योरपीडिया नहीं लिया है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, डू इट बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट एग्जाम फ्रॉम द कंटेंट वी आर गोइंग टू कवर। तो अच्छे तरीके से आप तैयारी करो एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। दिस इज द मटेरियल मैनेजमेंट फ्रेंड्स एंड हु इज एलिजिबल, ऑल ऑफ यू नो। And by the way, in case you have so far not purchased the module, you want to purchase module, this is the number at which you can call Gurvinder sir and he will discuss with you in detail about that. Wonderful opportunity जिसके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और 2 साल का MBA कोर्स किया है, डिप्लोमा कोर्स किया, 60% पे इंडस्ट्री में बैठे हैं और अब आप कोल इंडिया में आना चाहते हैं फॉर मटेरियल मैनेजमेंट पोजीशन, नथिंग लाइक दैट। ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आपके पास और यस, यू नीड टू स्कोर सम मिनिमम मार्क्स टू बेसिकली पास दिस एग्जाम। अपर एज लिमिट अच्छी दे रखी है तुम्हारे पास, 30 ईयर्स तक जितने भी लोग हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नया सिलेबस 2025 में आया है। पहला उसका टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस एंड इसके 4 पार्ट हैं, 4 टॉपिक हैं। दूसरा टॉपिक परचेज मैनेजमेंट जिसमें आज मैं प्रोक्योरमेंट साइकिल्स के ऊपर फोकस करूंगा, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है लॉजिस्टिक स्टोर्स इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल से। और इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इसमें एमआरपी, ईआरपी, सैप 3 पार्ट है, एमआरपी, ईआरपी, सैप। तो ये आपका टॉपिक नंबर 4 है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्रोक्योरमेंट साइकिल होता क्या है? प्रोक्योर होता है परचेज करना, खरीदना, उसको प्रोक्योर बोलते हैं। और किसी भी मटेरियल मैनेजमेंट जॉब में, एनी मटेरियल मैनेजमेंट जॉब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू परचेज और प्रोक्योर. So what are the various aspects of procurement and what are the various terminologies that you should know, what are the various stages, and at the end, like any our lecture, at the end we cover lot of questions so that you can watch. So purchase management, this is the procurement cycle we are going to cover. So as you see, we are going to cover each of the topic in each of the lecture. Maybe in this particular acts we have to cover more lectures, so that is what we are going to do. So maybe 8-10 lectures for this purchase management we will do and you will understand about that. So the steps of procurement cycle, you should understand the terminologies, what are the various steps. So we start with identification of the needs. If you want to purchase something, identify what you want to purchase. Identification of the need means organization को किस चीज का नीड है, घर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या खरीदना चाहते हो। जस्ट अंडरस्टैंड, व्हेनेवर यू वांट टू परचेज समथिंग एट होम आल्सो, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, बट व्हेनेवर यू वांट टू परचेज समथिंग एट होम, घर में कुछ खरीदना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नीड शुड बी देयर। विदाउट नीड इफ यू आर परचेजिंग, दैट इज अ वेस्टेज। नीड शुड बी देयर। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड इज द फर्स्ट स्टेज एंड देन कम्स परचेज रिक्वेस्ट एंड अप्रूवल। नीड आ गया बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द नीड यू मे नॉट परचेज। यू नीड टू हैव फाइनेंस, यू नीड टू हैव बजट एंड देयर इज अ प्रायोरिटी ऑफ द नीड्स। घर में भी क्या होता है, नीड बहुत चीजों की, मेरे को 4 चीज की नीड है लेकिन 2 ही खरीद सकते हैं क्योंकि बजट कम है। बजट कंस्ट्रेंट, रिसोर्स कंस्ट्रेंट will actually come into picture and you need to basically see what you can purchase. So identification of the needs, okay, then purchase request and approval. There is a department from which you need to approve the purchase. I have a need, can I purchase it? The department will tell on the basis of budget कितना है आपके पास और आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आपका पास ऑलरेडी पड़ा तो नहीं है। मे बी यू ऑलरेडी हैव इट। घर में भी आप बोलते हैं मम्मा को मेरे को शूज परचेज करने, मम्मा क्या बोलते हैं, शूज ऑलरेडी हैं, दैट मीन्स शी विल डिसाइड इट। सो यू एज कस्टमर विल रेज द नीड, you will raise the need as employee of the organization. I have the need of this but it may not be met. फिर then request for quotation, request for proposal, that will be raised. I mean vendor को आप invite करोगे, फिर vendor का evaluation करोगे। आपने रिक्वेस्ट डाल दिए, फिर बहुत से वेंडर्स आए, देन यू स्टार्टेड सेलेक्टिंग द वेंडर्स। आपने देखा कि कौन सा वेंडर अच्छा है, कौन सा जेन्युइन है, कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंसी, ऑथेंटिसिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, जेन्युइनिटी,
so that everything you will check, and then you will do negotiation. Vendor you have selected. Now vendor is saying, okay, I'll charge you 5,000 rupees, but you will do negotiation with the vendor, and then you will basically receive the order, and then you will see the delivery is good or not, inspection करेंगे आप उसकी, and then supplier performance का evaluation करेंगे, whatever you got. Next time if you want to purchase from the same supplier, तो उसका analysis करेंगे. तो friends, this is the procurement or purchase cycle. How do you purchase at home? पहले need आएगा, फिर परमिशन मिलेगा, परचेज कर सकते हैं कि नहीं, परचेज ऑर्डर निकाला जाएगा, परचेज रिक्वेस्ट निकाला जाएगा, फिर उसके बाद आप रिक्वेस्ट डालोगे कोटेशन के लिए, जो आप जिससे आप खरीदना चाहते हैं, द पर्सन वेंडर सप्लायर फ्रॉम whom you want to purchase, you will tell him to give you some kind of quotation, right? And the quotation will be then seen, and some vendors will be shortlisted, and then you will do bargaining with them. So vendor का evaluation होगा, कुछ vendor select करेंगे, फिर उनका contract negotiation होगा, contract sign होगा, फिर you will take the delivery, and then you will see whether everything was okay. These are the steps of procurement. तो इस पूरे के पूरे lecture में, in this entire lecture, this is what we are going to study, friends, right? I hope through this diagram things are clear. Let's start now. So purchase management. Purchase management is the process of acquiring goods or services from supplier to meet our requirement. Our requirement means company's requirement, right? This is the requirement of the company. So all these steps which I told you can be mentioned like this. You need to identify the needs, what you want, and instead of company, you can compare it with your house. You can compare it what you do at your home, at your house. So there is a identification of the need, what you require. Request approval. You will use a purchase request for internal approval of the purchase. मम्मी से आपने या पापा से आपने request को approve करवाया. Internal approval. Your papa at home, he is to spend money. He is to spend money. Your mummy at home, your mom at home, she will see already तो नहीं आपके पास कोई चीज पड़ी है. Already you have. Now you identify the need. You said I want pair of shoe. Let us say you said I want a pair of shoe, right? You told your father, your parents, your mother. Now father will see whether he can spend that much of money. Mama will first see there is a need or not. Priority of the need. Mama will tell internally whether there is a need or not. No, you already have shoes. अभी आपने कुछ months पहले लिए थे. You already have shoes, right? Now papa will say, mommy will discuss with papa. What is the budget for this month we can spend? So priority will be there. So internal request आप डालोगे. This is called request approval, right? Then find a supplier, find a shop. Now we want to purchase shoe. We need to see that कितने का shoe, कौन सी company का shoe. We will find a shop. We will find a supplier who can meet the requirement. So you will have your own requirement. You want something is there in your mind, what kind of shoes you want. Then in the shop you may negotiate the price and you will sign a contract. Because if it is with the company, तो supplier is to write something that okay, quality will be good, the product will be good. तो वो आपके साथ contract sign करेगा. The moment contract is signed, the person who is to purchase will place an order. He will place an order. Okay भाई साहब ये दे देना. The moment say give this shoe to me, you placed an order to him. Okay, पैक कर दें इसको. The moment he say पैक कर दें, हाँ पैक कर दो. Done. Then you receive that order and you check whether everything is good or not. So जैसे आप कोई ऑनलाइन चीज मंगवाते हो, आपके पास पहुंच जाती है, फिर आप चेक करते हो. You check for its accuracy, quality, quantity, everything. Then you pay it. Pay on receiving, right? That is what you do. When you get something from Blinkit, you get something from here and there. तो ऑर्डर प्लेस कर दिया आपने, वो पूछता है कैन यू ऑर्डर, कन्फर्म द ऑर्डर. इट आस्क यू कन्फर्म द ऑर्डर. आपने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, फिर सामान आया, फिर आपने चेक किया सब कुछ ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद आपने उसका पेमेंट किया. मेंटेन एंड रिकॉर्ड. तो कीप द रिकॉर्ड फॉर द परचेज. सो नेक्स्ट टाइम के लिए परचेज हिस्ट्री. मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ परचेज. दिस बिकम्स योर परचेज हिस्ट्री. और आजकल नॉट ओनली द वेंडर और सप्लायर, यू कीप द history of vendor and supplier, but vendor and supplier also keep the history of the customer. So these are the steps and I'm very sure ये सारे के सारे steps आपने यहाँ पे भी देखे हैं. When you see that okay, we identify the need, I want a shoe, purchase request and approval. मम्मी और पापा से approval होना है. मम्मी पापा in this case are the internal departments, purchase department or finance department of the company, and then you create some kind of order request
for quotation, request for proposal to the vendor, and then you select the shop, you select the vendor, and then you sign the contract with him, and then you see whether order has come or not. Now, what is the objective of purchase management? The purchase management topic is purchase management. So what is the priority or objective of purchase management is to lower the purchasing cost, minimize the risk, ensure supply security, manage the relationship with supplier, and improve product and service quality. These are the main objective of purchase management. When you say purchase management, what are the objectives for the purchase management? These are the main objectives, like we need to minimize the cost, we need to minimize the risk, हमारा प्रोडक्ट खराब ना निकले, ensure that supply is done safely, secure way में, relationships with the suppliers are maintained, and product and service quality is maintained. Now there are 5 P of procurement, there are couple of R's of procurement, couple of P's of procurement. इनकी terms में it is easy for us to understand. Procurement करना होता है purchase करना. Procurement means purchase. What are the 5 P of purchase or procurement? Power, people, process, planning, prevention. आपको इसको रटना नहीं है, you need not to rote memorize it, but yes, understand what are these 5 P. These 5 P are basically the principles that will decide the procurement cycle. Now what is power? Power is your power. Power is your power to influence your mummy and papa. Some kids at home, कुछ बच्चे घर में बार बार कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, पेरेंट्स का पेस्टरिंग करते रहते हैं उनको, and they irritate their parents a lot, उनको पेस्टरिंग करते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं, and then they end up purchasing something. So that is your power to purchase. And how influential you are, और पेस्टरिंग irritate करने वाली बात नहीं है. Maybe you are genuine guy, maybe every time when you purchase something you give something to the company, so you have more your prowess or more influence on the purchase department. So power means your authority or your influence on the purchasing team, the team which is going to purchase for you. You are the person who will create a need, you are a person that who generates the need, but purchasing team is some another department, so you need to have influence on them. People. Now in this entire process, some people, procurement staff, supplier, internal stakeholder. Stakeholder is someone जो आपकी इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. Stakeholder is someone who is involved. He can be within the organization, he can be outside the organization. Stakeholder जो इस पूरी प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपकी इस पूरी परचेज प्रोसेस के साथ जुड़ा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का आदमी है, चाहे वो वेंडर एंड सप्लायर है, he may be outside organization, vendor and supplier, or he may be inside the organization like purchase department of organization. These all are called stakeholders. So they are people. You need to deal with the people, right? You need to convince them. Then the process, you need to follow some process, request for quotation, request for proposal, purchase order. So you need to follow well established process. There will be enterprise resource planning, material requirement planning softwares, SAP यूज करते हो आप, तो हमने वो डिस्कस किया है सारा, तो उसमें परचेज ऑर्डर रिलीज करेंगे, आप उसमें लिखेंगे, सारी प्रोसेस बनाएंगे, तो देयर इज अ प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो. अगर गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट है, जेम पोर्टल है, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, how to use the GEM portal and all, so you should have some knowledge about that. Then comes planning, strategic approach to identify the requirement, setting budget constraints, and developing the procurement plans. So that is the planning. I mean, what is the requirement, what is the budget required, so planning, I mean anything you want to purchase. जिन घरों में the places, the homes where parents spend money after a lot of planning, well planned होके वो purchase करते हैं, those houses are well in order, तो अच्छे तरीके से चलते हैं. बट जहां पे प्लानिंग नहीं है, कुछ भी परचेज कर लिए, कितना भी परचेज कर लिए, so that is not a good home. So well planning is very important. And then prevention, avoid the potential problems like quality issue, delivery delays. So you need to be cautious, you need to be maintain the caution. आपको cautious रहना है कि कोई प्रॉब्लम ना आए. So prevention simply means that don't make mistakes, don't make mistakes. So these are the 5 P's involved in procurement. So procurement means 5 P. Power, how you influence your parents. Then people, everybody who is involved into this entire process. What process you have to follow, कैसे खरीदना है, प्लानिंग करके तब लेना है. प्रिवेंशन, गलती मत करना, गलत साइज का शूज मत परचेज करना है, डोंट परचेज द शू जो गलत है. मे बी यू मस्ट हैव गॉन टू द शॉप विद योर पेरेंट्स टू परचेज शू. तो क्या होता है, वो आपसे बार बार पूछते हैं, चल के देखो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कट तो नहीं रहा है, काट तो नहीं रहा है, कहीं शूज टाइट तो नहीं है. So you take that as a prevention, so that the product which you purchase वो खराब ना हो. So that is how you need to take. So these are the 5 P's of the procurement, right? Now what are the 5 R's?
of the procurement, 5 P's of the procurement, 5 R's of the procurement. The moment you understand what are the 5 P's, the moment you understand what are the 5 R, so in terms of 5P, in terms of 5R, you will understand what actually is the procurement cycle. 5R of procurement, right quality. Quality is something which is very, very important, and you have already studied what is the quality. Quality is conformance to your requirement. Quality is the perception of customer. Quality is something which customer will decide whether this pen is good quality or not. As a teacher, I can tell you because I'm a customer, not the company which made this pen. Okay, what is the most important thing in the pen? It should write. Then color is also one of the criteria. I mean, I may like black color, somebody may like red color. Not very important, but color is also feature. Is it writing? What is the life of this? What is the durability of this? How it is to comfortable to hold it? वो सारे इसकी as a customer, that is my perception. Now, if I say it's a very good, बहुत अच्छा है, तो high quality. So quality is something which is very important. Right quantity. तो जो आपने परचेज करना है कितना लेना है. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू वांट टू परचेज अ पेयर ऑफ शूज, आपको एक पेयर ऑफ शूज मिलेगा, मतलब लेफ्ट और राइट दो जो उसके शूज हैं आपके, वो आपका एक पेयर आपको परचेज किया जाएगा. ऐसा नहीं कि 2-3 खरीद के रख लेते हैं, मेरे को अभी 6 महीने के बाद भी चाहिए तो अभी खरीद लो. नोबडी विल परचेज दैट वे. यू परचेज दीज थिंग्स एज पर योर रिक्वायरमेंट और नीड. तो क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट. देन राइट टाइम. अभी 6 महीने पहले ही तो तुमने लिया था, अभी नहीं लेना है. राइट टाइम हैज टू बी देयर. राइट प्लेस, कब आपको कहां से लेना है, कैसे लेना है. करेक्ट डिलीवरी, राइट. राइट प्राइस. तो राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट प्राइस, ये 5 आर हैं प्रोक्योरमेंट के. सो एनी प्रोक्योरमेंट टीम फ्रेंड्स विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 5 आर्स. कोई भी प्रोक्योरमेंट टीम है वो इन 5 आर्स की बात करती है. यू शुड हैव दीज 5 आर्स इन द प्रोक्योरमेंट. अगर 5 आर आपके पास हैं, then the procurement is good. So what is the right quality? That goods and services meet defined specification and standards. तो जो भी तुम परचेज कर रहे हो, whatever you are purchasing in the company, in the organization, there is always a standard, there is always a specification as per which you should purchase. So this specifications and standards are well defined and you are to purchase according to it. Then comes right quantity. Right quantity, you cannot increase the inventory cost. आप स्टैकिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर सकते. तो राइट क्वांटिटी ओनली यू आर टू परचेज, बिकॉज इफ यू होल्ड मोर क्वांटिटी दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग मनी इन द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. राइट प्लेस, राइट प्लेस पे राइट टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए. सो द डिलीवरी ऑफ दीज थिंग्स शुड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. डिलीवरी शुड बी देयर. राइट टाइम डिलीवरी शेड्यूल शुड बी देयर. Right price, obviously that is the main activity of procurement department, purchase department, that you are purchasing at the right cost. So these are the things which are 5R of procurement. You need to consider these 5R. Now what are the key activities in the procurement management? What are the key activities in procurement management? Procurement cycle is a part of procurement management. और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं. सपोज यू आर इन द टीम ऑफ प्रोक्योरमेंट. आप प्रोक्योरमेंट टीम में हैं, तो आप प्रोक्योरमेंट करते टाइम व्हाट फैक्टर्स डू यू कंसीडर, व्हाट आर द स्टेप्स यू कंसीडर व्हाइल प्रोक्योरमेंट, ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट. एज आई टोल्ड यू, आइडेंटिफाइंग द नीड्स. व्हाट इज द नीड? नीड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन सोर्सिंग. हु कैन प्रोवाइड अस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. Identify potential supplier who can meet the organizational need. So source कौन है? Sourcing means identify the potential source. Supplier here is a source. The shoe shop. You want to purchase a shoe. You have identified the need. The need is to purchase a shoe. Now tell me from where I can purchase it. Identify the shops as per maybe your budget, as per your requirement. If you want to purchase the shoe which are formal shoes for the school, maybe there are a couple of vendors, couple of shops from where you can purchase it. So identify the source. Evaluation and selection. So you need to make the assessment of supplier as per various criteria: price, quality, reliability, etc. Whenever you want to purchase something from the supplier or vendor, you consider many aspects, you consider many factors. That I want to purchase from someone who will charge me this much cost. You know, there are some
vendors or shopkeepers or particular brands which are very costly, जहां से आप कुछ परचेज करोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो कुछ ऐसे सप्लायर वेंडर हैं जो बहुत कॉस्टली लेंगे, तो यू विल डू द इवेल्युएशन एंड अकॉर्डिंगली यू विल सेलेक्ट द वेंडर. नेगोशिएशन, यस, किसी भी दुकान पे जाओगे, आप खरीदोगे तो आप बार्गेनिंग करते हो विद सप्लायर फॉर प्राइस, फॉर डिलीवरी, फॉर टर्म्स, कि हमें वारंटी कितनी है, गारंटी कितनी है, वो सारा नेगोशिएशन करते हो. नेगोशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. सो एट द टाइम ऑफ परचेज you will have contract with the supplier or vendor, and when you will have contract with supplier or vendor, you will do lot of negotiations with him, and then you purchase, and there's a document is purchase order. Actual purchase of the things is done through purchase order. Purchase order means, what is purchase order? I got the order released for purchasing. You cannot purchase, you need to convince the purchase department to purchase the particular thing for you in the organization. तो परचेज ऑर्डर मिल गया, मतलब आपने परमिशन ले लिया अपनी मम्मी से या फादर से परमिशन ले लिया कि खरीद सकते हो, कोई बात नहीं, ओके परचेज इट, आपने उनसे परमिशन ले लिया, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर. देन लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी मींस गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर ऑन टाइम एंड इन रिक्वायर्ड कंडीशंस. ये आपको इंश्योर करना है. जैसे आप कोई भी ऑनलाइन परचेज करते हो तो ऑनलाइन वेंडर जो आपको सप्लाई करता है, यू मेक श्योर कि दोज थिंग्स आर गुड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड एवरीथिंग, राइट. इनवॉइस प्रोसेसिंग एंड पेमेंट. Now invoice processing and payment means you are releasing the payment to the vendor, verifying payment to the supplier. So now invoice is a term. Purchase order and invoice में confuse नहीं होना. Invoice is released by supplier or vendor, shopkeeper. बिल जो देता है तुम्हें, बिल दे दिया, ये लो पकड़ो, that is invoice. बिल पे लिखा हुआ 2000 रुपए के शूज. परचेज ऑर्डर इज योर फादर सेड ओके आई विल गिव यू 2000 रुपीज, दैट इज अ परचेज ऑर्डर. आपको शूज परचेज करने हैं, आपका घर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, आपको कुछ परचेज करना है, आपने परचेज डिपार्टमेंट के पास गए, फादर के पास गए, उन्होंने पैसा रिलीज करी है, वो परचेज ऑर्डर है, ओके यू कैन टेक. देन यू आइडेंटिफाइड, यू नो, परचेज ऑर्डर इज रिलीज टू फॉर सम पर्टिकुलर सप्लायर और समथिंग. उससे पहले आपने सप्लायर को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको असेसमेंट कर लिया, उसके क्रेडेंशियल चेक कर लिए, एवरीथिंग यू डिड. नाउ इनवॉइस इज रिलीज्ड, इनवॉइस इज रेज्ड, इनफैक्ट रेज्ड, नॉट रिलीज्ड. परचेज ऑर्डर इज रिलीज्ड, इनवॉइस इज रेज्ड. इनवॉइस मतलब वेंडर और सप्लायर हु इज गोइंग टू गिव यू समथिंग, ही विल नाउ टेल दिस इज द रुपीज 2000 रुपीज, दैट इज इनवॉइस. एंड देन you have purchased it. Now the time has come when you maintain your relationship with the vendor. Every time you don't want to go through, you know, the same process, so you will maintain good relation with the vendor now, and then performance monitoring will be done, and you will see where the scope of improvement. So every time you want to purchase something, the vendor will say this time you will give me this thing. So if you have good relation with the vendor supplier relationship, if you have good strategic relation, it can help you to do bargaining, it can help you to get better service, or sometime when you delay the, you know, releasing his payment and something, so they keep on serving you, that is the better part. So procurement cycle, also known as purchase cycle or procurement life cycle, are the steps basically to purchase something or acquire something. So acquire, purchase, procure, they all are English terms. Acquire और परचेज और प्रोक्योर आर ऑल द सेम टर्म्स. एक्वायर करना, परचेज करना, प्रोक्योर करना, वो एक ही टर्म की चीजें हैं. बेसिकली यू वांट टू परचेज इट, कंपनी गेट्स बेस्ट वैल्यू फॉर इट्स मनी while meeting its operational needs. So whenever company is purchasing something, the company is getting the best value for whatever it is purchasing or whatever money it is spending. So procurement makes sure you get the best. So what are the typical stages? Identify the needs, as we told you. So now they are a little more in detail. Recognize the need for product or service, right? So at this stage you have to define how much you need, what is the quantity, what is the quality, all this you need to specify. Develop the specification. You need to tell what are the specification, detailed specification. Potential supplier, understand what are the detailed specification, technical detail,
quality standards, performance, everything. So specification should be mentioned in quite a detail. All the specification you have to mention well in detail. So the moment you identify the need, then you have to develop the specification. This is very, very important. And supplier should understand what exactly you want. That is a very, very important thing. So whatever you want to purchase, the supplier or the vendor should very well know what are the specification and what you want. Then you have to explore the supply options. Potential supplier you have to identify who can provide you the needed goods and services, right? Various methods to find supplier are there, like online search you can do, you can through reference and all. So find the supplier. Then you do their evaluation, various factors, right, including price, quality, reliability. So potential suppliers are evaluated on the basis of many factors. He delivers on time, trustworthy hai, he delivers good quality, he delivers the things at minimum cost, he is good person to get along with, right? So strategic partner ban sakta hai. So the formal process to evaluate and select supplier is request for proposal or request for quotation to gather information from supplier and compare their offerings. So quotation and proposal is something which you take from many suppliers. So you will come out with the open bidding or open something choice. It can be open platform where you give the advertisement that we need these things. So those who are supplier can give their proposal. आप अपना प्रपोजल दे दो, मेरे को ये चीज चाहिए, आप अपना प्रपोजल मेरे को दे दो, अपना कोटेशन मेरे को दे दो, तो ये आपका कोटेशन एंड प्रपोजल आप इनसे ले सकते हैं. नेगोशिएट टर्म्स एंड कंडीशंस. तो आपने उसके बाद जब सप्लायर को फाइनलाइज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स, देन यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग. सो आपने एक सप्लायर को आइडेंटिफाई कर लिया, ही इज द गाय फ्रॉम हुम आई एम गोना परचेज, देन यू स्टार्टेड डूइंग नेगोशिएशन और you started negotiating the terms of contract with him, price, delivery schedule, payment terms, all these things you started negotiating with him. Then agreement with the supplier you will sign. Now purchase order is formal document which will authorize the supplier to provide you goods. The moment you release the purchase order to the supplier, release the purchase order to supplier. So purchase order is something which you give to supplier or vendor. आप परचेज ऑर्डर सप्लायर और वेंडर को देते हो. इनवॉइस वो रेज करता है जब उसको पैसे लेने हैं. इनवॉइस में लिखा होता है कितने पैसे आप सप्लायर को दोगे और वो सप्लायर रेज करता है. परचेज ऑर्डर में लिखा होता है कि हमें ये चीज चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए और आप प्लीज हमें ये दे दो. दैट इज अ परचेज ऑर्डर. सो परचेज ऑर्डर इंक्लूड्स क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डेट, पेमेंट टर्म्स, एवरीथिंग. तो हमें 5 शूज पेयर चाहिए, इतने रुपए में मिलेंगे, आप मेरे को उस तारीख को दे देना, गिव मी ऑन दैट डेट एंड पेमेंट विल बी गिवन ऑनलाइन, राइट? सो मोड ऑफ पेमेंट, सो दैट इज अ परचेज ऑर्डर. सो बी वेरी क्लियर अबाउट परचेज ऑर्डर एंड रिलीज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. नाउ देन यू इंस्पेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज. वंस दिस कम्स देन यू इंस्पेक्ट इट. जैसे ही कोई आपके पास ब्लिंकिट से या अदरवाइज अमेजोन से कोई ऑर्डर आया, देन यू स्टार्टेड सीइंग इट वेदर इट इज गुड इन क्वालिटी, अच्छा है कि कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं होगी, ये क्वालिटी खराब शेप में नहीं है, तो यू स्टार्टेड inspecting it. Then you process the invoice and payment. Supplier will send you invoice for goods and services and then you verify the invoice and process the payment according to agreed terms. So invoice कौन देता है? वो देता है आपका वेंडर और सप्लायर. और परचेज ऑर्डर कौन रिलीज करता है? जिसको परचेज करना है, परचेज डिपार्टमेंट, राइट? दैट इज हाउ इट इज डन. देन यू डू द इवेल्युएशन ऑफ सप्लायर्स परफॉर्मेंस. कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, कैसा उसने किया. Evaluation consider factors like delivery time, quality of goods and services, responsiveness, how good he was responding to your requirements, delivery उसने time पे की, quality कैसी थी, quantity वगैरह जो आपने लिया. So this feedback is very good for next time, next procurement cycle. So important considerations are like, yes, everything should be cost effective, efficient, risk should be properly managed, you should not provide the damaged goods and services, that should not be there, and supplier relation management is to be basically taken care of. Procurement cycle is a continuous cycle. Cycle है तो मतलब continuity है. Anything which is shown as a cycle, procurement cycle. तो जो भी चीज को तुम साइकिल में दिखाते हो, that means वो continuous है, वो कंटिन्यूटी में होगा, बार बार होगा, रिपीट होगा. साइकिल मीन्स पीरियोडिक, साइकिल मीन्स रेपिटेटिव, साइकिल मीन्स इट विल बी कंटिन्यूअसली डन. सो प्रोक्योरमेंट साइकिल मीन्स इट विल बी कंटिन्यूअसली डन.
right? So there will be new supplier, new companies will keep on coming, and that is how you have to identify whether you want it and how you want it. So these are the stages in procurement cycle. So identify the requirement, generating a tender. I will discuss what is the meaning of tender also. Sourcing the identification. Tender means आपने want to basically invite the quotation. Now you want to basically find out the vendor or supplier. So what tender does? Tender is nothing but a document in which you tell about your requirement. This is what I want. This is what I want to purchase, and then you open it. Float the tender. तो आपने टेंडर को फ्लोट कर दिया. When you float the tender, that means you told everyone that I need this, and then potential supplier you started source. Then you start sourcing the potential supplier. Who can be the potential supplier? You started sourcing him. Then you choose the best option, and then you award the contract to one particular supplier, and then you negotiate with him contract, and then you start, getting the things. This is how it goes. So you defined the requirement, and after that tendering goes. Steps he can ask you. What are the first step? The first step is requirement, requisition. That is the first step. You require something, and after that tendering or sourcing. Tendering or sourcing, where you are inviting the supplier, and then supplier evaluation. You evaluate the supplier. You just check whether supplier is good or not. Then you award the contract. फिर आपने contract award कर दिया. Then purchase order. Then invoice. And इस तरीके से ये सारे के सारा, अगर वो कुछ terms आपको दे दे, tendering, awarding, this thing, invoice and all these things, तो आपको ये लिखनी होती है कि किस तरीके से आप इनको फॉलो करोगे. सो दीज आर द साइकल्स फ्रेंड्स. Contract management, procurement planning. So this is how it all goes, friends. These are the stages which I told you. So these are the stages which follows, right? So tendering is a document created to outline the needed goods and services, and you send this document is sent out to potential suppliers. Whosoever is interested to purchase, potential supplier, that is there. Tendering. And sourcing is identification of the potential suppliers that we want to basically purchase these things. Evaluation and selection. Evaluation and selection, you select something, and then you award the contract to some people, and contract management is done, procurement planning is done. That is how this all goes. Right, so procurement planning means the strategies which you are using for future procurement requirements, market ka trend, potential risk, cost optimization and all. Let's understand now this term, friends. What is a request for proposal and what is a request for quotation? Company will invite the proposal from multiple supplier, right? Request for quotation and request for proposal difference is, in the request for quotation, normally price comparison is done. Quotation means price, primarily price comparison. Proposal and quotation में difference is, proposal mention many things, quality, specification, other things also. Quotation is price. Quotation word का मतलब price से होता है. Request for quotation means you are asking the supplier or vendor to give you something in which price is mentioned. Price is mentioned, in which you mention about the price, how much price will be there. So document which is used to simply request price quotation. So request for proposal, request for quotation. जब आप टेंडर रिलीज करते हो तो टेंडर के बाद वेंडर को रिक्वेस्ट करते हो, ओके गिव मी योर प्रपोजल. देयर विल बी मेनी सप्लायर्स, गिव मी योर प्रपोजल. प्रपोजल और कोटेशन में, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में डिफरेंस इज क्लियर. कोटेशन इज प्राइस, right? Request for proposal is used when you want to evaluate different things. Request for quotation is when you want to compare the price information. So price information is request for quotation. So request for proposal is more comprehensive thing from the vendor. Methodology, experience, qualification, what is the qualification of vendor and all,
Request for quotation is price, only price. When to use? When you want to evaluate different solution approaches, then request for proposal, otherwise request for quotation. Now what is a purchase order, friends? Purchase order is a document that buyer sends to a seller. So that is, the buyer will send to a seller to request goods or services. Purchase order. I want to purchase something, I release purchase order to the vendor. मेरे को खरीदना है, सप्लायर आप हो तो मैं आपको परचेज ऑर्डर रिलीज करूंगा. परचेज ऑर्डर इज राइट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ फॉर्मल ऑफर एंड इट इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द सेलर एक्सेप्ट्स इट. अगर मैंने परचेज ऑर्डर रिलीज किया आपको, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इट इज लीगली बाउंड. मैं भी और आप भी, आपको देना है और मेरे को लेना है. टू कम्युनिकेट माई रिक्वायरमेंट्स क्या है? फॉर्मलाइज द एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, दैट इज द परचेज ऑर्डर. द मोमेंट परचेज ऑर्डर रिलीज हो गया, तो अब ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया दैट यस आई वांट टू परचेज एंड यू हैव टू सेल मी. दैट इज अ परचेज ऑर्डर. उससे पहले बार्गेनिंग वगैरह सब हो जाता है, नेगोशिएशन सब हो जाता है. तो परचेज ऑर्डर रिलीज हो गया मतलब आप देंगे, एंड इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ परचेज. राइट. कितने टाइप के होते हैं? स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, वन टाइम परचेज, प्लान्ड परचेज ऑर्डर. Planned purchase order means when company needs to order goods or services but does not have all the information. Blanket purchase order, recurring purchase over a period of time, contract purchase over long term business relationship. तो ये चार टाइप के आप थोड़ा सा नाम याद रख लेना परचेज ऑर्डर के टाइप्स. स्टैंडर्ड मींस यूज फॉर वन टाइम परचेज. प्लान्ड, company is not very clear, still planning, but I want to purchase but I am still planning, I am still some changing. Blanket, recurring purchase. So which purchase order is used for recurring purchase? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, over a period of time, again and again, my requirements are coming, I can purchase right now, after some time again I can purchase. So the purchase order, I mean recurring, requirement is recurring, I can purchase after some time also. Contract purchase order, long term business relationship के लिए. So types of purchase order, this is important. And what are the key elements of purchase order? Purchase order number should be there, date should be there, the buyer information should be there, seller information should be there, then ship to address should be there, item description should be there, quantity, unit price. एक बार देख के चला जाना परचेज ऑर्डर में क्या क्या होता है. Just see this, what is there in the purchase order. Now friends, as we cover every time, there are questions which you have to cover. In every lecture you will find documents you have to take. These all documents, this entire module is no notes making module to help you prepare really well. अगर ये सारी चीज मैं आपको लिखाऊंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे. तो मैंने सारा लिखा हुआ है, क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस आपको करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको लेना है, आपको कुछ लिखना नहीं है. इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यू आर नॉट टू राइट एनीथिंग, जस्ट टेक दिस डॉक्यूमेंट एंड वट एवर इज मार्क्ड विद रेड लाइन यू हैव टू फोकस दैट ऑन मोर. लेक्चर सुनो, डॉक्यूमेंट लो और क्वेश्चंस लगाओ. फर्स्ट स्टेप इन प्रोक्योरमेंट साइकिल इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स. ये क्वेश्चन इसी में से लिए गए हैं, एंड दीज क्वेश्चंस व्हिच आई गिव यू आफ्टर द लेक्चर इज टू रिवाइज द लेक्चर. Question which I give you after the end of lecture, that is to revise the lecture, but questions which I give you separate will be practice question for you. Which stage involve searching potential customer? तो exploring या sourcing, जिसको बोलते हैं sourcing, right? Sourcing जो stage है, that is to find out the potential supply, exploring supply options, right? Request for proposal is most commonly used during which stage? Supplier evaluation. Request for proposal. Yes, now you give me the proposal. You means supplier. You have to give me the proposal. What is purpose of purchase order? Purchase order is released by the person who wants to purchase, the organization which wants to purchase, to the supplier, and once it is released, it is a legal document, formal document where we commit that yes we want to take it. This is a formal document and it's a legally bound document. Purchase order is legally binding on the supplier as well as the person, the organization which is going to purchase. Which stage involves identifying that delivered goods services meet specification? Yeah, that is the inspection stage, right? This is the inspection stage. What is the final step in typical procurement cycle?
इवेल्युएशन. सो इवेल्युएशन इज द फाइनल स्टेज. अगर एग्जाम में मेरे को लगता है जो क्वेश्चन आएगा वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग से कवर करेंगे हम. परचेज ऑर्डर, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन या स्टेजेस, स्टेप्स क्या हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है. विच स्टेज कम्स फर्स्ट, विच स्टेज कम्स सेकंड. फाइनल स्टेप क्या है? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. विच स्टेज इन्वॉल्व्स एग्रीइंग ऑन प्राइस, डिलीवरी एंड अदर आइटम्स. Okay, so once you have identified the supplier that he's gonna be supplier, he's gonna be vendor, then you sit with him on contract agreement, and contract agreement sign करने से पहले आप उनके साथ negotiation करते हो. तो contract agreement is signed only with one supplier or vendor, and with that supplier or vendor you do negotiation. तो negotiation उस टाइम पे करते हो. Which document formally authorizes the purchase? Purchase order. Who releases purchase order? The organization which is to purchase. Evaluating supplier performance. What is the purpose? Evaluation is to improve further procurement decision, because maybe supplier is not first only one time supplier. He may be in future also he is going to be supplier. So you need to evaluate him so that future may also you can procure the things. Which of the following is not a typical goal of procurement management? Minimizing cost, yes, we want to do that. Ensuring timely delivery, yes, we want to do that. Maintaining quality standards, yes, we want to do that also. Product complexity, why we want to maximize the complexity? In fact, we want to minimize the complexity. We don't want to maximize the complexity. So yes. Request for proposal is typically, when request for proposal is used, a buyer is seeking solution and proposal for how to meet complex needs. Okay, buyer, I am the buyer, so request for proposal I will ask for. Price, quotation means price. So remember, quotation, request for quotation means I am only bothered about the price, cost of the procurement. I am only interested is कि cost कैसे कम हो, या cost को मेरे को कम करना है. I am only interested about the price, that is quotation. Proposal carries many things. Proposal carries like what kind of person you are. I am interested to know that also. What kind of brand you have, what kind of quality you will give me, that is proposal. But quotation means भाई पैसा बता मेरे को जो सबसे कम देगा. Government goes for L1 and that is where government does mistake. L1 means जो सबसे कम कोट करेगा मेरे को उसको लेना है, और यही क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाता है. And quality vendors do not step in the procurement. Now you guys are gonna join the government, understand that. Try to change it, but it is difficult to change in the government system, right? L1 means quotation. Which document is more likely to include detailed specification and evaluation? Proposal, right? Which document is more likely to focus only on the price? That is quotation. Request for proposal generally used for what? Commodity purchase, office supplies, routine maintenance, और complex projects resulting consulting services, custom solutions. So proposal तब करते हैं अगर प्रोजेक्ट complex हो, जिसमें बहुत सी चीजें तुम्हें देखनी है. तुम्हें यह भी देखना है कि सप्लाई कौन कर रहा है. परचेजिंग स्टैंडर्ड हार्डवेयर, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड कोई चीज परचेज करनी है, सॉफ्टवेयर परचेज करना है, मेरे को बस प्राइस ही देखना है, मेरे को बाकी चीजें पता है, तो इट्स वेरी सिंपल. सो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन इज डन व्हेन एवरीथिंग इज वेरी रूटीन, सिंपल. बट quotation for request for proposal is when things are complex and there are more factors, more parameters involved. Which document requires more effort from supplier to prepare response? Obviously proposal. ये extensive proposal है, right? Some more thorough document. Quotation is easier to make. Multiple rounds of questions and clarification proposal में. Which scenario best describes when to use request for quotation? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, 100 लैपटॉप लेने हैं, 100 मोबाइल लेने हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, और एज प्राइस ही उसमें एक मेन चीज है. परचेज ऑर्डर क्या होता है? लीगली बाइंडिंग ऑफर टू बाई गुड और सर्विस. क्या ऐड होता है परचेज ऑर्डर के अंदर? बायर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, सेलर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आइटम डिस्क्रिप्शन, यस, वो चीज उसमें ऐड होती है. तो द मोमेंट यू रिलीज परचेज ऑर्डर, मतलब बायर विल रिलीज परचेज ऑर्डर, परचेज ट्रांजैक्शन इज फॉर्मलाइज्ड. इट विल बिकम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सेलर एक्सेप्ट द परचेज ऑर्डर. सेलर ने उसको हां कर दिया तो ये एग्रीड हो गया, राइट?
सो दीज आर कपल ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक 30 क्वेश्चंस फ्रेंड, इनको आप एक बार कर देना, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन बने हैं. सो दिस वाज माय लेक्चर ऑन प्रोक्योरमेंट साइकिल. परचेज मैनेजमेंट का प्रोक्योरमेंट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. Needless to say, you are watching the best module on contract, this your material management of Coal India Limited. URPD is the main player for that. In case you have not purchased it so far, the first thing you should do is procure it, purchase it. We are the best vendor and suppliers. You can trust us. All the very best friends. Keep watching URPD. Thank you.